अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आङ् ह्लैङ्ग् इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अद्य सम्मिलेत्। देशयोः मिथः ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-सम्बन्धानां दृढीकरणे रणनीतिक-सहयोगवर्धने च चर्चा अस्ति सम्भवा। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मिथः अद्य द्वितीयक्रमिकः द्विपक्षीयरक्षासंवादः। रक्षामन्त्रिणोः राजनाथ सिंह रिचर्ड माल्स् इत्यनयोः मिथः भवेत् चर्चा। पश्चिमबङ्गालराज्ये नवसङ्घटितस्य शुभेन्दुप्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तरः अद्य। नूतनाः 35 मन्त्रिणः शपथग्रहणं कुर्युः। अद्य प्रातः नबन्ना इत्यत्र भवेत् शपथग्रहणकार्यक्रमः। लेबनान इत्यत्र इस्राएल देशेन आक्रमणानि तीव्रीकृतानि। लेबनान देशस्य दक्षिणस्थिते ब्यूफोर्ट् दुर्गे इस्राएल देशस्य सेनायाः आधिपत्यं। प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहु इत्यस्य वक्तव्यं हिजबुल्लाह संघटनस्य क्षेत्रेषु स्वीयाधिपत्यम् इतोपि दृढं कुर्यात् इस्राएल देशः। गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलं 5 स्तोभैः पराजित्य आरसीबी इति दलं क्रमेण द्वितीयवारम् इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यं प्रथितं कीर्तिमानम् अर्जितवत्। विराट कोहली इत्यसौ 75 धावनाङ्कान् समर्जितवान्। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आङ् ह्लैङ्ग् इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निमन्त्रणे भारतस्य आधिकारिकयात्रायामस्ति। असौ अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह नवदिल्ल्याम् उपवेशनं कुर्यात्। एतस्मिन् अवधौ उभयोः देशयोः ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-सम्बन्धानां दृढीकरणे चर्चा जायेत। एतेन सह म्यांमार राष्ट्रपतिः एकस्मिन् व्यापारमञ्चीये कार्यक्रमे अपि सहभागितां कुर्यात्। श्वः च असौ मुम्बै महानगरं सम्प्राप्य व्यापारोद्योगसम्बन्धितेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात् इति। मन की बात इत्याख्यस्य मासिककार्यक्रमस्य 34+100तम्यां शृङ्खलायां प्रधानमन्त्री मोदी गतदिने अनेकेषु विषयेषु निजविचारानुपस्थापितवान्। तत्रैव ग्रीष्मर्तौ देशस्य विभिन्नभागेषु प्रसिद्धानां शीतपेयानां चर्चाम् अपि असौ विहितवान्। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूरोप यात्राम् अपि उल्लिखितवान्। ततः चोलकालीनप्राचीनानां ताम्रपट्टिकानां भारतं प्रति अर्पणम् अपि असौ विज्ञापितवान्। एतेन सहैव छत्तीसगढ़राज्ये समावाप्तानां त्रयाणां दुर्लभताम्रपट्टिकानां सन्दर्भे अपि असौ निजविचारान् उपास्थापयत्। ताम्रपट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्रपट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा
राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे गंगानद्यां डॉल्फिन इत्येतेषाम् अस्तित्वं संरक्षितुं क्रियमाणान् प्रयासान् जनानां धैर्यं च भृशं प्रशस्तवान्। सहैव गंगा डॉल्फिन आपत्कालीन वाहनस्य विषये अपि असौ निजविचारान् तत्र उपस्थापितवान्। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणां द्वितीयः द्विपक्षीयः रक्षापरः संवादः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजितः स्यात्। एतस्य उपवेशनस्य सहाध्यक्षतां भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अथ ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्स इत्यसौ कुर्याताम्। एतस्मिन् उपवेशने सेनायाः सामञ्जस्यप्रसङ्गे रक्षोद्योगस्य सहविकासे अथ सहोत्पादनस्य अवसरेषु चर्चा जायेत। आशा अस्ति यत् अनेन उपवेशनेन उभयोः देशयोः मिथाः रक्षासम्बन्धाः सुदृढाः भवेयुः अथ हिन्दप्रशान्तक्षेत्रे स्थिरता अथ सुरक्षा संवर्धिते भवेताम्। अवधातव्यमस्ति यत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षामन्त्रिणः रिचर्ड माल्स इत्येतस्य भारतयात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये मिथाः विस्तृतायां रणनीतिकसहभागितायां संवर्धमानां गतिं प्रदर्शयति इति। पश्चिमबङ्गालराज्ये भाजपा इत्येतत् दलस्य नवसङ्घटितप्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः अद्य जायेत, यतः अद्य 35 संख्याकाः नवमन्त्रिणः शपथवचनं स्वीकुर्युः। शपथग्रहणसमारोहः अद्य प्रातः 11 वादने नबन्ना इत्याख्ये स्थले आयोजितः भवेत्, यत्र राज्यस्य राज्यपालः RN रविः मन्त्रिभ्यः पदगोपनीयतायाः शपथवचनं कारयेत् इति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः कर्तव्ययुतस्य अथ रचनात्मकस्य जनसञ्चारमाध्यमस्य आवश्यकताम् अभिलक्ष्य वचनविशेषं ख्यापितवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रशासनस्य नीतीनाम् अथ च राजनीतिकनेतॄणाम् आलोचना लोकतन्त्रस्य महत्त्वपूर्णा कार्यविधा अस्ति, परञ्च एषा आलोचना सत्यनिष्ठायाम् अथ तथ्येषु आधारिता भवेत्। केरलं राज्यस्य कोट्टायं स्थले मलयालम दैनिक दीपिका इत्याख्यस्य समाचारपत्रस्य 40-अधिकैकशततमं स्थापनादिवससमारोहं सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः प्रतिपादितवान् यत् स्वस्थपरा अथ तथ्ययुता आलोचना लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयति इति। जनरल इत्युपाधिभूषितः NS राजा सुब्रमणी इत्यसौ देशस्य नूतन रक्षाप्रमुखत्वेन दायित्वं गृहीतवान्। जनरल सुब्रमणी इत्यसौ जनरल अनिल चौहान वर्यस्य स्थाने समागतः, यस्य हि कार्यकालः शनिवासरे पूर्णः जातः। देशस्य नूतनः रक्षाप्रमुखः जनरल NS राजा सुब्रमणी इत्यसौ राष्ट्रिययुद्धस्मारके हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। एतस्मिन् अवसरे तस्मै साउथ ब्लॉक इत्यत्र गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतत् सम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। तत्र वरिष्ठाः सैन्याधिकारिणः अथ प्रशासकीयप्रतिनिधयः अपि समुपस्थिताः आसन्। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन इत्यसौ गतदिने
सप्तविंशतितमस् नौसैन्यप्रमुखत्वेन कार्यभारं स्वीकृतवान्। एड्मिरल् स्वामीनाथन् इत्यसौ एड्मिरल् दिनेशकुमार त्रिपाठी इत्येतस्य स्थानं स्वीकृतवान्, यः हि सेवानिवृत्तः जातः। एतस्मिन् क्रमे स्वामीनाथन्वर्यः अभिव्यक्तवान् यत् समाह्वानयुतं कठिनं च परिवेशं पश्यत् नौसैन्यबलं सक्रियरूपेण सज्जमस्ति। असौ अग्रे कथितवान् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं भवति, येन हि इदं बलम् इतोपि प्रबलं भवेत्। इस्रायेल् देशेन लेबनान् इत्यत्र आक्रमणानि तीव्रीकृतानि सन्ति। लेबनान् देशस्य दक्षिणस्थिते ब्यूफोर्ट् दुर्गे इस्रायेल् देशस्य सेनायाः आधिपत्यं जातमस्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहु इत्यस्य वक्तव्यमपि समक्षमायातम्। असौ उक्तवान् यत् हिज्बुल्ला सङ्घटनस्य क्षेत्रेषु स्वीयाधिपत्यम् इतोपि दृढं कुर्यात् इस्रायेल् देशः इति। जगतः बृहत्तमस्तरीयायाः पदकन्दुकक्रीडायाः ऐषमः फीफा वर्ल्ड कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनाय सज्जता साम्प्रतं द्रुततरगत्या जायमाना अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिका कैनेडा मेक्सिको देशानां संयुक्ततत्त्वावधाने वस्तुतः एतस्याः प्रथितायाः प्रतीक्षितायाः च प्रतियोगितायाः अन्तिमा निर्णायिका च स्पर्धा न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम इत्याख्ये क्रीडाङ्गणविशेषे भविष्यति। तावत् जगतः विविधदेशानां कोटिशः पदकन्दुकक्रीडाप्रशंसकाः स्वागताय न्यूयॉर्क नगरं सम्पूर्णतः सज्जं दृश्यमानमस्ति इति विशेषः। ऐषमः इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः अन्तिमे चक्रे गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलं 5 स्तोभैः पराजित्य आरसीबी इति दलं क्रमेण द्वितीयवारं कीर्तिमानम् अर्जितवत्। तावत् आरसीबी इत्येतस्य दलस्य विराट कोहली इत्यसौ 75 धावनाङ्कान् समर्जितवान्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।